All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. All right. Okay जी, so respected fellows, हम अपनी discussion में proceed further. Okay जी, before proceeding further, let me tell you we have 2 interviews today. So जिन aspirants के हम interviews plan करते हैं, अगर वो किसी वजह से नहीं ले पाते हैं, इसको स्केड्यूल करें, रीमैनेज करें, और बाद वक़्त ऐसा होता है कि बाद में फिर उनकी बारी जो है वो आ भी नहीं पाती है। ठीक है जी? सो कोशिश कीजिएगा इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। अब हम प्रोसीड फर्दर करते हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं जो कि इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ का पार्ट रहे, और हम 18th सेंचुरी के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। कल हमारी डिस्कशन अगर आपको याद हो तो हम कुछ नॉवल के जॉनरा पे बात कर रहे थे, एंड आई वाज टेलिंग यू सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉवल, व्हाट आर द रीजंस कि अगर तो आपने नॉवल को अपना फेवरेट जॉनरा के तौर पर लिया है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और हम ये तमाम चीज़ें वन बाय वन देख रहे थे। सो जी, नॉवल के मुतालिक तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने के बाद हम डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि आपने किस किस डायमेंशन में तैयार किया। ज़रा अभी के लिए मुझे ये कम्युनिकेट कीजिएगा कि हमारे साथ इतने कितने एस्पिरेंट्स हैं जिनका फेवरेट जॉनरा नॉवल है। You just supposed to write me in the chat box. So just say yes in the chat box so I may come to know how many total aspirants are there having novel as a favorite genre. Okay, Miss Tamjida is Maheen is okay. So there are lots many aspirants who have the novel as a favorite genre. Whenever you prepare novel, it is really important to mention here कि आपका जो previous interviews हैं उनमें से एक टाइप को स्पेशल फोकस दिया गया था 2017 और 2020 के इंटरव्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इट इज द नॉवल ऑफ टेरर। अब जब भी नॉवल ऑफ टेरर की बात आती है तो कहा यह जाता है, जो क्वेश्चन शुरू होता है पैनलिस्ट जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जब आप 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करते हो, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से क्या मतलब है, 1700 से कहानी शुरू होती है और 1750 तक जो है वो। सो आप फर्स्ट हाफ के अंदर जो है आपने जो नॉवल देखते हैं इसके अंदर जो रोल ऑफ टेरर था वो कहाँ तक था। सो टेरर का जो है कॉन्सेप्ट क्या है, आपको नॉवल ऑफ टेरर का पता होना चाहिए। गॉथिक नॉवल किसे कहते हैं आपको इसका पता होना चाहिए। आपने इसकी डिटेल्स को जो है वो गूगल करके जाना है, आपने इसको ढंग से देख के जाना है कि गॉथिक नॉवल किसको कहते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि जब आप इनको देखेंगे तो दो नाम आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है हॉरेस वॉलपुल, बाय द वे क्यों फेमस था है, लेकिन जो दूसरा नाम जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था लास्ट टाइम वो थी मिस एन रेडक्लिफ जो हैं। ये दो नेम हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इनको जो है वो डिस्कस करें और इनको जो है वो समझ कर जाइएगा। Now let us try to understand the questions, all those questions that have been asked in previous interviews from these two particular writers, from these two names. Well, whenever you talk about the Gothic novels, whenever you talk about the horror novels, you need to remember Horace Walpole is considered the pioneer of Gothic novel in England. So, जब आप इसकी बात करते हो तो डेफिनेटली आपके ज़हन में एक ही नॉवल आता है, एंड दैट इज द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। और कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है आप जानते हो 1764 के अंदर लिखा गया। अब अगर आपका नॉवल फेवरेट जॉनरा है और अगर क्वेश्चन जो हैं वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि पूछे गए, ठीक है, बिकॉज
whatever we are discussing in this session, all the questions have been taken directly from the previous interviews. जो कुछ मुझे कहना था या जो कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन बतानी है वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। इन सेशंस के अंदर बहुत तमाम चीजें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन से इससे पहले वाले इंटरव्यूज के। द कैस्टल ऑफ अट्रेंटो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश फिक्शन के अंदर जो है। अब वजह पूछी जाती है कि हॉरेस वॉलपोल ये लिखता क्यों है, व्हाई ही वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नॉवेल ऑफ टेरर, देन डेफिनेटली यू नीड टू मेंशन के रियलिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन था। याद रखिएगा जब भी हम किसी भी एज की बात करते हैं, एवरी एज इज द रिएक्शन ऑफ द प्रीवियस एज। मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा, न्यू क्लासिकल थे, न्यू क्लासिकल ने क्या बात की थी, हमेशा जो है वो एक ही बात किया करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये समझते थे कि अगर आप रूल से हट के कोई बात करते हो तो वो एक फजूल है, absurd है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उनके टेन्योर में आप ड्राइडन को पढ़ते हो, आप पोप को पढ़ते हो, आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़ते हो। अगर कोई पोइट्री के अंदर इमोशंस की बात करता था तो ही वाज पेंटेड एज अ फूल। सो इमोशंस जो है वो उनको दबाया जाता था, लेकिन ये एक एक्शन था, एक एज का एक्शन था। लेकिन इसी एज का रिएक्शन बाद में आता है। वो क्या आता है, रोमांटिसिज्म के तौर पर आता है। अब रोमांटिसिज्म क्या है, सारी की सारी बात ही इमोशंस की हो रही है। जिस चीज को एक एज में दबाया जा रहा था, उसी एज के ऊपर पूरी की पूरी, उन्हीं इमोशंस के ऊपर पूरी की पूरी एज जो है वो बेस करती है, दैट इज रोमांटिसिज्म। सो इसी तरह से whenever you are going to talk about the castle of Otranto, you need to talk about that it was a reaction against the realism. It was a reaction against the didactism. It was a reaction against the sentimentalism. So ये सारी की सारी चीजों के खिलाफ था। इसको ये लगता था कि ये क्या आप जो हैं वो बातें बयान करते चले जा रहे हैं, ये कोई सेंटिमेंट्स का नाम तो नहीं है। सो हॉरिस वॉलपोल इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अपनी एज, अपने लोगों को गुड बाय कहता है और एक नया सुपर नेचुरलिज्म का एलिमेंट जो है और क्राइम का एलिमेंट जो है वो लेके आता है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको, आप जरूर पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिला। एफ एवंस की किताब जो है, कल भी मिस फातिमा पूछ रहे थे, एफ एवंस की बुक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वो बड़ा जबरदस्त कमेंट्स कहता है, और अगर आप ऐसे कमेंट्स को अपने इंटरव्यू के अंदर मेंशन कर सकें तो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। अच्छा जी, सेशंस को बड़े गौर से लिया कीजिएगा। आपने शायद नोट किया है कि मेरी कोशिश होती है कि हम कभी भी 1 मिनट लेट ना हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा 1 मिनट लेट होने का मतलब है कि अगर 30 लोग हैं तो 30 लोगों का 1-1 मिनट लेट हो जाएगा। आई डोंट नो कि आपके नज़दीक ये 1 मिनट की क्या अहमियत है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि हमारा सेशन शुरू से लेके एंड तक जो है वो आपको ये ज़रूर पता चले कि आपने जो चीज़ें लर्न की हैं वो आपको कितना बेनिफिट जो है वो दे सकती हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको कहाँ तक जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं। जी मैं लिख रहा हूँ मिस माजबी, इनकी किताब है दैट इज़ वेरी फेमस बुक, ए शॉर्ट हिस्ट्री। आसानी से जो है वो ये PDF आपको मिल जाएगा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अच्छा जी, इनके अंदर ये डायरेक्टली मेंशन करते हैं कि वेलपुल कैरिड आउट द मिडिवल कल्ट मोर कंप्लीटली देन मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्पररीज। सो ये हम जो हैं कैस्टल ऑफ ऑट्रेंटो की बात करेंगे, फिर हम जो हैं वो ये बताएंगे कि इसका अपने वर्क के बारे में क्या ख्याल था जब हम नॉवल की बात करेंगे। सो नॉवल में दूसरा नेम हमारे पास जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इन्होंने इस सारी की सारी मूवमेंट को जो है वो लीड किया, देन वी हैव मिस रेडक्लिफ। Miss Redcliffe was basically not doing anything, but she was imitator of Walpole. So वॉलपुल के अंदर जितनी भी चीजें थी, आप जब भी नॉवल को तैयार करोगे, गोथिक को करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए गोथिक रोमांस को देखना भी जरूरी होगा। आप इसे भी देखिएगा। आप जब गोथिक रोमांस को देखेंगे तो आप पता चलेगा कि हमारे पास रेडक्लिफ ने कितनी चीजें ऐसी थी जो बाद में उसने अपने आने वाले नॉवेल्स द इटालियन के अंदर लिखी, जो बाद में आने वाले उसने अपने नॉवेल्स के सीन्स के अंदर जो है वो शामिल करते चले गए, ठीक है।
सो ये जो दूसरा नेम है इसको आप जो है वो ढंग से पढ़ेंगे। ये दो ही नाम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। With this, we are going to end up our discussion about novels and specifically about the 18th century. कोई भी सदी जब अपने इख्तिताम को पहुंचती है, कोई भी सदी जब खत्म होती है, वो बहुत सी ऐसी चीजों को लेके जाती है जो बिल्कुल भी मुख्तलिफ होती हैं, जो हटके होती हैं। तो कैसे हटके होती हैं? अभी हमारे पास ये नॉवल का जॉनरा खत्म होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एज आ जाती है जो कि हमारे पास रोमांटिक मूवमेंट है। रोमांटिक मूवमेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोस क्वेश्चंस जो कि इस मूवमेंट से, इस एज से जो हैं वो लिए गए हैं। एक इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जब किसी से ये पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिक एज, तो एस्पिरेंट ने बड़ा वाज़े अल्फाज में ये कहा, द एज दैट स्टार्टेड समवेयर इन 1798। ये समवेयर तो मैंने ऐड कर लिया, बट उन्होंने ये कहा कि स्टार्टेड इन 1798 एंड एंडेड इन 1832। रिमेंबर एस्पिरेंट्स, कभी भी कोई एज यकदम ना तो शुरू होती है ना ही खत्म होती है। So if in your interviews you are going to talk about a specific age और एक ईयर का नाम लेते हो कि रोमांटिसिज्म 1798 में शुरू होती है, लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन से, इससे पहले नहीं थी, that is an absurd comment. Grace कीजिए guys. So maybe अगर ऐसे questions हो तो हम ये बता सकते हैं कि it's not possible for any age जो अचानक से शुरू हो, जो अचानक से प्रोसीड फर्दर करे, बल्कि it takes time. So what romantic age was exactly? Very important question. Whenever we say romanticism, romanticism is a different word, a different term, and romantic age, that is a different definition, that is a different term. Remember, whenever you're going to talk about the age, romantic age is another name of romantic movement. And that was not only an English phenomenon. Remember, the repercussions of romanticism were felt across the globe in 18th century and later on in different times, in different countries, in different ways. For example, Germany was quite close to England, so Germany was the first country that felt the changes in sensibility and in the society. With the passage of time, romantic age engulfed a lot many activities of that particular country. So ये सच है कि 1798 में हमारे पास इंग्लैंड में रोमांटिक एज तो आ जाती है, लेकिन रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट के तौर पर प्रवान तो कहीं 1830 के अंदर जाकर चढ़ती है। सो जब आप रोमांटिक एज के ऊपर बात करोगे, रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट के ऊपर बात करोगे, आप अपनी गुफ्तगू को, आप अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करोगे रिएक्शन से। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इट इज अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो किसी एक्शन के बाद होता है। सो किसी एक्शन के बाद होने वाला रिएक्शन जो है वो हमारे पास रोमांटिसिज्म होता है। अब जो है आगे चलते हैं। हमें जो है ये समझने की जरूरत है कि जब हम रोमांटिसिज्म को डिफाइन कर रहे हैं, ये रोमांटिसिज्म क्या होगी? सो आपकी क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं? प्लीज रेज योर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म, व्हाट कम्स इन योर माइंड? What do you feel that this is the definition of romanticism? What is your definition of romanticism? So, what is your definition? And I may open your mic और आप जो है वो proceed further कर सकते हैं।
Love for nature. Anyone who would like to speak on this topic? Bilawal, please go on, Bilawal sir. You may open your mic. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Bilawal sir. Hello. Bilawal, you are audible. Please go on. Am I audible? Hello. Bilawal, I am audible. Yes, sir. You are audible. Am I audible? Yes, that is the reason I'm asking. You may proceed on. Okay. So romanticism is basically an age which was a reaction against the classicist age, neoclassicals, and it was based on height and extreme of emotions and imagination. It was related to isolation and these kind of things. So overall, it was a kind of a rebellion, which was quite opposite to the rules and regulation based age of classicism. So it was totally, you can say, isolated age with the spirit of rebellion and exile. Very good. That's very good. Anyone from female side would like to answer the same question? Thank you, Bilawal. I'm using you. Is there any participant from female side who would like to speak on the same question for a second, maybe? Yes, Aruba, please go on. Assalamu alaikum, sir. Actually, romanticism is focuses on subjectivity. As in the previous age, there was human beings, actually humans, two emotions were not given any space. So romantic actually focus on subjectivity. It has a very French Revolution has a very strong influence on it, and even the slogan of romantics were very similar to the slogan of French Revolution, that was liberty, equality, and fraternity. Actually, they focuses on the liberty, they focuses on the equality, and they stood for the fraternity. Thank you so much. Thank you so much. Okay, well, participants, you have heard both the answers. दोनों आंसर्स ठीक हैं. अच्छा, मैं अगर समझता हूँ कि इस आंसर को, इन आंसर्स को अगर हम इस तरह से दे दें कि रोमांटिसिज्म जो है, जब हम किसी भी सिज्म की बात करते हैं तो शायद हमें समझने की ज़रूरत है, मूवमेंट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन. मूवमेंट जो है वो लॉन्च की जाती है जब भी आप चेंज करना चाहते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी. सो रोमांटिसिज्म नाम था कि जब लोगों ने एक्सप्रेस करना शुरू किया जो उनके अंदर प्रेस हुआ था, जो इससे पहले वाली एज न्यू क्लासिकल एज ने प्रेस किया था, जब उसको एक्सप्रेस करना शुरू हुए तो वो हमारे पास रोमांटिसिज्म जो है वो उसके नाम से आए. और जैसे लोगों ने, और इसकी बड़ी वजह जैसे अभी रूबा ने बताया कि हमारे जो राइटर्स हैं, दे आर नॉट लिविंग इन वैक्यूम, दे आर नॉट लिविंग इन अ वैक्यूम. They are part of the same society. Yes, Aruba, you want to say something? You have raised your hands. No, sir. Actually, by mistake. Okay. Thank you. Well, whatever was happening in 1789, अगर वहां पे तब्दीली आई थी कि जो पुअर, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी था, वो गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिटीज के अंदर भी मेंशन किया हो. इसी तरह से अब लिटरेचर के अंदर भी जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो ऊपर आ रहे हैं. सो यस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड रोमांटिक एज, और आप इसको कभी नहीं भूलिएगा. ओके, the next question about romanticism is, what is the difference? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. So I'm just moving towards the next second. अच्छा जी, अरूबा का हैंड में लोड डाउन कर रहा हूँ. आप इसे दोबारा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे रेज कर सकते हैं.
So what is the difference between imagination, feeling, and emotions? Anyone who can speak on the difference, what is the difference between imagination, feelings, and emotions? Yeah, unke liye, those people who are going to have the romantic age as their favorite one. So अरूबा का तो इंटरव्यू भी प्लान है। अरूबा, हम आपसे थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट करते हैं, आपने शायद दोबारा हैंड रेज किया। अरूबा के अलावा कोई और पार्टिसिपेंट अगर इस पर कमेंट करना चाहे, तो आपको इन तीनों को देखने की जरूरत है। So when Wordsworth say, I have said that poetry is a spontaneous overflow of the powerful feelings, तो आपको इसको समझने की भी जरूरत है कि what is that, और इन तीनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। फोर्थ क्वेश्चन जो इस एज का है, जो आप जरूर तैयार करोगे, एंड दैट इज द डिक्शन एंड द मीटर ऑफ द रोमांटिक एज। किस तरह से ये एज जो है वो डिफरेंट थी, इसका जो है वो डिक्शन और मीटर के ऊपर आप बात करोगे, और इसके डिक्शन और मीटर की जब आप बात करोगे तो तब आप बताओगे ये सिर्फ एक रिवॉल्ट नहीं था, ये सिर्फ एक लिरिकल फॉर्म की तरफ एक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि आप ये बताओगे कि ये सारी की सारी फॉर्म्स की चेंजिंग थी, जो कि लिरिकल बैलेट के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट के अंदर जो है वो इसमें मेंशन किया गया। और आप इसमें बताओगे कि ये सोशल अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी जो है वो एक किस्म का रिवॉल्ट था, जैसा कि मैंने अभी आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की। सो हमारे पास रोमांटिक एज में अगर हम रोल ऑफ इमेजिनेशन देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी जो है वो ओपन हुई थी। रोमांटिक एज वो पहली एज थी कि जिसने सही मानों में डिलाइट्स लोगों को दिए हुए थे। And how you can focus to mention and talk about ST Coleridge and the supernaturalism of ST Coleridge. Remember one thing, while you're mentioning and giving the details about ST Coleridge, Coleridge was considered, and he is the wonderful writer of this age, having extraordinary capability of dreams and imagination. And while you're preparing ST Coleridge, you need to remember what was the difference between ST Coleridge. That is the fifth question. What is the difference between the writings of ST Coleridge, Keats, and Wordsworth? So you need to remember the difference as well. And if I'm not wrong, I'm sure that you will prepare some verses from ST Coleridge, Keats, and Wordsworth. By the way, the very poem, The Rime of Ancient Rainer by ST Coleridge, is very important. Okay. The last, some questions, 2 questions, and then we will proceed further towards the first interview. That is the interview of Miss Aruba. Whenever you prepare the younger romantics, I'm talking about P.B. Shelley, I'm talking about Byron and Keats. Remember one thing about them. These 3 writers, you need to prepare a comparison as well. Shelley, Byron, and Keats. In fact, Lord Byron and P.B. Shelley, Lord Shelley, both were lords, but Keats was a common person, a common man, who I'm sure that you will quote here the verses of Campton Ricketts, that he was completely different. Keats is content to express the thoughts with the senses, and that is the reason he is famous for his sensuousness. And after that, the last question about romantic melancholy. So what do you feel whenever the 7th question that I'm going to type in front of you, that is about romantic melancholy? So I'm sure that you know the lines, God is in his heaven, all is right with the world. So whenever you're going to answer this question, the point is you need to define melancholy. Like, what
melancholy is. That is a part of the feelings. For example, if I'm not fine, my health is deteriorating on daily basis, I'm not happy, so I will be in that particular situation. So romantics, while we are reading romantics, we feel the very sense of melancholy there. So you can mention some lines from William Wordsworth from SC Coleridge. So these people, they're going to help you in your final interview. Okay. So if I'm not wrong, for I have leaned to look on the nature, not as in the art. A lot many lines from William Wordsworth. You can easily look at these lines. So these are the important questions that have been taken from the elder romantics. I'm not talking about specifically here about Keats. I'm not talking about P.B. Shelley. I'm not talking about Lord Byron. I'm talking about those people who are considered the elder romantics. And here I will reiterate, whenever you're going to prepare, do not forget to prepare the comparison between S.T. Coleridge and William Wordsworth. Okay, so you need to prepare the comparison, because the comparison be the part of a lot of interviews, and I'm expecting the question. Those people who are going to take romantic age as a favorite one, definitely they will have to answer a lot of questions from it. So approximately 7 questions we have discussed so far, and I'm sure that you guys have noted on all the details, and my expectations are that you are preparing your own notes. So enough for the questions. Now we are going to proceed further with our first interview. That is the interview of Ms. Aruba. So Ms. Aruba, you ready for your interview? Okay, sir. But sir, I haven't prepared the topics, but I can speak, I think so. All right. Ms. Aruba, should we start? Should we proceed further with the phone interview? You do not need to mute your mic, Aruba. Okay, sir. You do not need mic, because otherwise I will have to unmute it for every answer. So Aruba, what is your introduction? Please give us your brief introduction. I am Ruba Shakil from Lahore. I did my BS, my early education from Lahore, and I did my BS from University of Education, Township Campus, Abad. Beside this, I am doing postgraduate diploma from Punjab University, and after this, I'm thinking to take admission in B.Ed, and I will do my B.Ed from Punjab University. Okay, well, thank you so much for giving us such a detailed introduction. May I know what is the meaning of your name, Aruba? Aruba means a girl who loves her husband. So the name was given by your mother, if I'm not wrong? No, by my cousin. Okay. So do you believe in the theory that names, they have effects on the personalities? Yes. How you are going to relate this particular case in that particular theory? Because I was very young when I got engaged, and I have very strong feelings towards him, and I can't even deteriorate at single point. I have gone several ways. I have got many proposals, but I can't accept anyone. All right. All right. So, Mr. Ruba, you have mentioned that you are doing your diploma from Punjab University, postgraduate diploma. Yes. So, when the Department of English of Punjab University was established, because you are doing your diploma from there, so I'm
sure that about the campus and about the Department of English where you're taking your classes. So these basic details, I'm sure that you have came I across don't the have now. details. Did it? Okay. Postgraduate diploma. Yes. What is the duration of this diploma? Sorry, sir. Duration. What is It is the of 1 year. talking about your hobbies? What are your hobbies? I write poetry whenever I get free. Why poetry? Why not drama? Why not novel? Why poetry? Because I think so poetry is a very appropriate way to express your emotions in less words. So it means those people who are expressing their emotions through novel and drama, that is not an appropriate way as per your views It is are concerned. appropriate, but it is their interest. As far as my interests So are what concerned, sort of I love to express my thoughts through poetry. so as poetry So may I is your narrate my favorite poem? genre, sure, you may go on with that. Mhm. You're not audible, Miss Aruba. Okay, I'm searching my poem. I will just. Sir, come Kipling and see. Your breed has taken you sternly. Russia is setting forth to take the burden of Ukraine. How could His Highness depreciate? But I heard a cry that captives are civilized. Oh, Kipling, come and introduce them with the true burden of whites. Open a speech and put this to their concise. The burden was actually of instinctive desires. Materialistic appeal and lust for might had actually sent your sons to exile. Now come and watch the show of pride. Your own land is now setting on fire. Well, that's an excellent piece. So you have mentioned the name of Rudyard Kipling, if I'm not wrong. Yes, his So White Man's Burden. okay, so as you have mentioned his name, I'm sure that you know the nationality of Rudyard Kipling. Yes, he's from India. Actually, he was Anglo-Indian. Okay, Anglo-Indian or British Indian. What is the appropriate term? Anglo-Indian or British Indian? Anglo-Indian. All right. Okay, so Kipling has wrote a lot many books. I'm sure that you have read the books of Kipling. Can you mention the name of just 4 books of Rudyard Kipling? He wrote novel Kim, which was very even our political When leaders it of was that time. published, They liked that book. Kim? I don't know, All right. but I don't have All this in right. mind. But even our Nehru liked that book. And besides this, um, jungle books about You his son was what is the name of the and he wrote. novel? All right, fair enough. What is the name of the novel that was the main reason for the Nobel Prize of Rudyard Kipling? Yes, he got Nobel Prize in 1907, but I don't know why. Kim was a novel actually. So, would you like to talk about the main themes of the Kim? Like, don't you feel Kim, that is an orphan son, he is having an exaggeration, the Rudyard of Kim, that is
This is sort of exaggeration. So I haven't read that novel. You haven't read that novel. Okay, all right. So Rudyard Kipling wrote poems as well. Yes. And I just read his If, Only If, and the Department Burden. Okay, yes. So would you like to recite some from the If poem? So, not now because I just read it and I can't recall it. Hope. Can keep And your it is head very, it's a when all masterpiece of about Kipling. you. All right. If you can keep your head are losing theirs and blaming it on you. Clear? I have just Yes. recited a couplet. Yes. So can you identify some literary devices from these lines? If you can Okay, can you keep your please head. repeat? Oh yeah, sure, Aruba. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. Mm, keep your head and I can't say. Okay, all right. What is the name of your favorite poet, Miss Aruba? Yes, sir. What is the name of your favorite poet? What is the name of your favorite poet? Sir, I like Keats. John Keats. All Yes. right. Why Keats? Why not Shelley? Why not Byron? Why Keats? I like Keats. I like don't. Of course, I like Shelley as well, but not as much as I like Keats because, of course, Shelley is revolutionary, but Keats actually actually presents a. I like his Ode to Autumn. He is actually presenting a totally different version of autumn. He's actually would write odes about something that we hails, and he's actually hailing autumn. He's actually saying that everything has its own value, everything has its own song. We should not appreciate the one thing on the basis of its quality, whereas we should also see the other things. It would have also some qualities. So Well, that was a wonderful answer, Miss Aruba. हम इस सेशन को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और यहीं से अपनी डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे. ठीक है? okay.